I am the MotoGrapher. In 2019, I embarked on the journey of a lifetime on the fantastic Indian-made Bajaj Dominar 400s, christened as the xBhp Dominar Great Asian Odyssey. The road trip went from New Delhi, Nepal, Bhutan, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia, Malaysia, and finally to the tip of Singapore and beyond to Sri Lanka. Here we go. Yes, so we are back in Dal Khola and there's a 30-minute traffic jam ahead. So there's going to be a lot of trucks and lorries and buses and bullock carts and bicycles and tractors and everything. So God bless us. Thankfully, the traffic jam at Dal Khola was not as bad as earlier, and we managed to cross it relatively quickly this time. आज दूसरा दिन ख़त्म होने को है और हमने स्टार्ट किया था मालदा से और वी आर अबाउट टू रीच सिलीगुड़ी। जस्ट यहाँ से सिर्फ 25 या 30 किलोमीटर रह गया है। काफ़ी कुछ देखा आज हमने, मतलब अच्छे रोड से लेकर ख़राब रोड भी, और 70-80 की स्पीड पर आराम से हम क्रूज़ कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ है इस रोड पर कि जब आप क्रूज़ कर रहे हैं, ये जो हाईवे है मालदा और सिलीगुड़ी वाला, तो इस रोड पर काफ़ी सारे गड्ढे भी हैं और ब्रेकर्स भी हैं, तो काफ़ी संभल कर चलाइएगा क्योंकि उनकी वजह से आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। पूरे दिन ऑलमोस्ट हम भागते रहे, वैसे ज़्यादा कुछ देखने को था नहीं ऑन द हाईवे। लास्ट में आकर ये जगह हमें देखने को मिली सिलीगुड़ी से जस्ट 25 किलोमीटर पहले, और बहुत ही शानदार और ब्यूटीफुल जगह है। टी स्टेट्स हैं और सनसेट हो रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर फ़ोटोग्राफी वगैरह करी जाए, और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने यहाँ पर। और आज के दिन हम काफ़ी लोगों से भी मिले, मतलब बीच में कुछ एक फ्रेंड्स भी आए और कुछ बाइकर्स भी आए, ऑन द हाईवे मिले और मिलकर अच्छा लगा उनसे, और कुछ स्टोरी शेयर करी हमने उनके साथ। Good morning. So as usual, a very late start for the team. Today is a very long riding day. Riding from Siliguri to Guwahati. It's about 500 kilometers. It was again a 500 kilometers day for us, which we knew was going to be long. But we didn't know that it is going to be one of the very special days for the Odyssey as well. Why? Let's find out. So, चाय मिलेगा पीने के लिए? पीने के लिए तो नहीं मिलेगा। हाँ? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? अच्छा, ये क्या फ्लेवर्स है बस? तो हम लोग यहाँ चाय पीने गए थे टी एस्टेट्स में। इससे अच्छा क्या हो सकता है अगर यहाँ टी एस्टेट्स के बीच में चाय पीने के लिए मिल जाए। लेकिन हमारी किस्मत में लगता है नहीं है। नहीं, क्या बोल रहा है? वो बेच रहे हैं वैसे, बस पैकेट बेच रहे हैं, पीने के लिए नहीं है।
So I am right now in front of the Hashimara Air Force Station, and it's in West Bengal, very close to Assam, and so I'm very surprised to see that southern style temple made in West Bengal. I mean towards the northeastern part of India. So these kind of temples you usually see in South India, not here, not even in North India. Probably it's made by the officers who are posted at Air Force Station here. So I'll quickly take a photo as well as offer my prayers here. We kept finding a lot of these beautiful places along the way and just kept shooting without realizing that we'll be getting late to reach Guwahati. सो जस्ट अभी हम क्रॉस कर रहे थे अलीपुर द्वार, और साइड में से ना कुछ लोगों ने हाई किया, मुड़ के देखा कुछ बाइकर्स थे, और यहाँ पर देखिए, ये देखिए कितने सारे दोस्त लोग आए हुए हैं। कि मैं इनको इंट्रोड्यूस करता हूँ आपसे। मैं शुभदीप दास। मैं शान शुभा। Hi, my name is Parthu. सौरभ दत्ता। तोमजीत रॉय। And my name is Abhishek Bhushan Rai. I am from Alipurdwar. हाँ, मैं राकेश राज मित्रा हूँ और मैं बिलोंग करता हूँ एक्सट्रीम नॉर्दर्न डेविल्स को, जो अलीपुरद्वार से है, और 2010 से है हमारा ग्रुप। एक छोटा सा शहर है, बहुत सारे बंदे हैं जो बाइक चलाने को पसंद करते हैं, और सारे में एक मेंटलिटी सेम है कि सारे बाइक को लव करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे राइडर्स को। तो इसी के साथ ये हमारा ग्रुप बना था और आज भी है। आप देख सकते हैं बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हमारे यहाँ पे, और बाकी जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग ऑफिस में वो आ नहीं पाए, बस ऐसा ही है। और बहुत अच्छा लगा भाई लोगों, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ओके बाय। अभी रुको, आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा, तो पहले जाने देता है इनको। There was a huge convoy of army vehicles that was passing through that area, and we kept waving at them to show our respect towards them. And they also waved back at us, and some soldiers also gave us a salute as well. It's a long convoy, man, very long. Okay, bye guys, bye. There was a surprise meet with the bikers on the way, but we soon realized that it is just one of the many meets that we will be having with the bikers before we reach Guwahati. सर मिल रहा था, 4 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं सर। अरे रे रे रे, आपका नाम? फारूक अब्दुल्ला सर। फारूक अब्दुल्ला, हाँ। अच्छा। फारूक दीपक से मिलने के लिए खड़े थे आप? हाँ। लेकिन दीपक ने देखा नहीं शायद आपको, वो निकल गए। वो निकल गया। सुबह से हूँ मैं यहीं पे रोड पे, पूरा काम भी नहीं गया आज मैं। चलो थोड़ा आगे साथ में, तो फिर है ना? थैंक यू भाई, आपका बहुत थैंक अरे यू। आप रहा हूँ मैं पूरा।
मैं दीपक भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो आज मैं कल रात ही मैंने वो अपडेट देखा था स्टोरी में, तो वही से मैं पूरा रात सोया भी नहीं था, मतलब पूरा रात जाग रहा था कि कब सुबह होगा, कब मिलूंगा। फिर सुबह फिर जब माल बाजार का वो स्टोरी देखा, फिर आके मैं रोड पे खड़ा हो गया और पिछले 4-4.5 घंटे से मैं यहीं पे हूँ, मतलब। बट अच्छा हुआ मिल गए, है ना? हाँ, मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मतलब इतना खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ भाई, बहुत खुश हूँ, आप मिले मुझसे। The sun had set by now, but the sequence of our meet with the bikers had just begun. A short break to tell you about myself. In 2002, I founded xBhp, which is India's most popular motorcycling platform and print magazine. Since 2006, I have been riding around the world on choicest of the motorcycles and supercars. Do check out the xBhp forums, which are a great place to discover fantastic information on motorcycling in India. Also help us sustain ourselves by picking up a copy of the xBhp print magazine delivered to you at your doorstep if you are in India, or available at one of the premium bookstalls around India. You can also read the digital version online. The link is in the description below. Now let's get back to the Odyssey. Guys, हम लोग हैं अभी कहाँ? Bongaigaon. Bongaigaon is about 170 kilometers from Guwahati and it's well past sunset. And कहाँ जा रहे थे? गुवाहाटी। गुवाहाटी से पहले हमें कौन मिले? राइडिंग मैनियक्स। तो राइडिंग मैनियक्स इज अ ग्रुप फ्रॉम धुबरी आसाम। धुबरी कितना दूर है यहाँ से? 120 किलोमीटर। अच्छा, तो आप लोग 120 किलोमीटर्स राइड करके आए हैं? हाँ। है ना, यहाँ पे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर, अच्छा, और काफ़ी देर से वेट भी कर रहे हैं यहाँ पे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर, राइडिंग ऑल द वे एंड मेकिंग all these efforts to meet us. Thank you so much, Zia. Thank you, sir. अच्छा, Zia, अपने ग्रुप के बारे में बताएंगे पहले थोड़ा सा? This is Jaur from Dhubri, riding maniac. This is Ramesh from Dhubri. This is Abhishek Kumar Prasad from Dhubri, riding maniac. Hi, this is Jonas from Dhubri, riding maniac. Hi, this is Tariquজ্জামান from riding maniac Dhubri. हम लोगों का एक्चुअली एक मोटरसाइकिलिंग क्लब है, एक ग्रुप ऑब्वियसली xBhp को देखकर हमने इंस्पायर्ड होकर फॉर्म किया है एंड वी आर ट्राइंग टू प्रमोट बेटर मोटरसाइकिलिंग इन वेरियस वे दैट सेफ राइडिंग एंड एवरीथिंग। हम लोगों का ग्रुप में नियर अबाउट 100-120 मेंबर्स है, तो इतना ही बस। बहुत सारे लोगों ने, अगर आप नॉर्थ में बात करो, साउथ में बात करो, तो शायद धुबरी का नाम भी ना सुना हो, और ऐसी जगह पर जिया और उनके बाकी सारे साथी राइडिंग मैनियक वाले इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि वहाँ पे सेफ राइडिंग प्रमोट कर रहे हैं। दे प्रमोट बेटर मोटरसाइकिलिंग ओवर देयर, और बहुत सारे चैरिटी राइड्स और सोशल कॉजेज से रिलेटेड राइड्स भी करते हैं। लास्ट टाइम एक्चुअली क्या हुआ, दिस ईयर 2 महीने पहले हमारा टाउन पूरा डूब गया था और जितने भी अगल बगल के गांव है सब डूब गया था। असम में बहुत भारी फ्लड हुआ, तो उस टाइम हम लोगों ने कुछ चैरिटी वगैरह कलेक्ट करके हम लोगों ने, हमारा जितना बाइकिंग कम्युनिटी है, स्पेशली थैंक्स टू xBhp, बहुत सारा हेल्प किया उन लोगों ने हमको, तो हम लोगों ने वो जितना हो सके हमसे वो करा। अच्छा, तो आप सप्लाईज खरीद के जो बोट में बैठ के जो फ्लड अफेक्टेड विलेजेस थे वहाँ पर गए थे? हम लोगों ने, क्या हुआ, हम लोग कोर एरिया में गए थे, एक बोट को रेंट में लेकर, जितना कोर एरिया, जितना मतलब लोग अफेक्टेड हुए, जहाँ तक लोग पहुँचे नहीं उधर तक हम पहुँच गए थे इस बार। तो 3 बार हम लोगों ने ऐसा किया, एक नॉट 1 टाइम। अच्छा, 3 बार हम लोगों ने रिलीफ दिया। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, और ऑल द बेस्ट, और congratulations to you for doing all this, and keep doing what you are doing, and keep riding and ride safe. Sir, xBhp team. I heard about xBhp at 2007, जब मैं पहली बार मैगजीन पढ़ा, उससे मेरा मोटरसाइकिलिंग का पूरा व्यू ही चेंज हो गया। मतलब पहले मैं कुछ दूसरा सोच रहा था मोटरसाइकिलिंग के बारे में, स्ट्रीट रेसिंग एंड ऑल, तो वो चीज़ पूरी है। xBhp has taken to motorcycle to the different level, and उन लोगों ने ओरिजिनल मोटरसाइकिलिंग मुझे आज सिखाया है, क्या होता है मोटरसाइकिलिंग से, क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड इससे बड़ा नशा कहीं नहीं है, मैं कहता हूँ। मान लो, जिंदगी का सबसे बड़ा नशा मोटरसाइकिलिंग है, वही कर लो भाई।
नशा मोटरसाइकिलिंग का नशा कर लो, पर नशा करके मोटरसाइकिलिंग मत करना, है ना? नशा करके मत करो। हाँ। सर अगर मोटरसाइकिलिंग का नशा चढ़ गया तो आपके पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं बचेगा। अच्छा तो हमारा ये राइडर अभिषेक आप लोगों से मिलने के लिए नया डोमिनर खरीद के लाया। अच्छा हाँ, क्यों सो मैं मच। दिन से सोच रहा था कब आप लोग आओगे, उसके पहले मैं कैसे भी करके डोमिनार निकाल लूं और मैंने निकाल लिया, मैं सक्सेस हो गया और आज मीट भी कर लिया। थैंक यू सो मच। सो द गुड पीपल एट बजाज, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, इफ यू आर वाचिंग दिस, ये देख लिए क्या हो रहा है। बट थैंक यू सो मच अभिषेक, आपने मतलब खैर बाइक अच्छी है, डिसीजन अच्छा है, चाहे हम एक उसके पीछे एक छोटा सा रीज़न बने तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के, बट थैंक यू सो मच। मेरा नाम संकदीप दास है, मैं मोटोरेट का ऑफिशियल मेंबर हूँ। मेरा नाम गुनामोनी दास है, मैं UBCA का मेंबर हूँ। अभी मैं हावली से हूँ। ग्रुप का नाम क्या है आपके? मोटोरेट यूनाइटेड असम। Okay. We are still about 120 kilometers away from Guwahati, and the meeting session is still going on. It's a small town called Howli, and we met these guys over here. They were waiting for us here. It was a very short meet. We just stopped to say hello and take a couple of selfies. That's it. But thank you so much, guys, for coming here. And that's it. Now there's one more group of bikers waiting for us. Bye bye. Thank you guys, thank you. Are yaar, you've been waiting here for a very long time, I heard. Hi. Welcome. Hi, thank you, thank you. Welcome. Hi. So we are still about 80 kilometers from Guwahati, our destination for the day. It's about 10:30 p.m. and we met these bunch of bikers here at Tihu. This place name is Tihu. So we came to know that these guys have been waiting here on this highway since 3:30 p.m. Okay. 6 hours. So they have been waiting on the highway for 6 hours just to meet us. So this is really humbling experience, guys. Thank you so much for all this love. And you didn't have to do that. I wish you didn't do that. But thank you so much from all of us at xBhp. Thank you so much. हाँ, तो there are representatives of 2-3 different clubs here. Yeah, Ankur Das, my name. I'm from Bikers Brotherhood Nolbari. Okay. And welcome. Okay, Dhruva Sharma from Bikers Guwahati and from RS200 community. And I am Darpan Oleman from Assam Bikers and RS Community Assam. आपका तो पता है। सागर बनर्जी, xBhp. Hello, I am Simanta Reka from RS200 community. Jyotirmoy Deka from Bikers Brotherhood Nolbari. Suman Kolita from Tihu Riding Club. My name is Hiran Raja. I am from Bikers Brotherhood Nolbari. Santanu Kolita, Bikers Brotherhood Nolbari. Nitul Das, Tixar, Baksa Rider Club. Manav Das from Tixar BSC. Okay, यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 to 6 ग्रुप है। असम बाइकर से मैं हूँ और RS कम्युनिटी से भी बिलोंग करता हूँ, और दूसरे ग्रुप से हमारा नलबारी का बाइकिंग ब्रदरहुड क्लब नलबारी है, और बाइकर्स गुवाहाटी, वो गुवाहाटी से है, बाइकर्स गुवाहाटी एंड टीहू राइडिंग क्लब है, और हमारा साथ है टिक्सटर्स BSC फ्रॉम बक्सा डिस्ट्रिक्ट। सो यही ग्रुप है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। और ये बताओ कि आप 3:30 बजे क्यों वेट कर रहे थे, और क्या दिस इज द एक्साइटमेंट फॉर xBhp एंड यू गाइस। So Assam is awesome! Assam is awesome! Thank you. And by the time we reached on the outskirts of Guwahati, it was already past midnight. But to our surprise, we found another bunch of bikers waiting for us right at the entrance of the city. And they escorted us into Guwahati right up to our hotel. If this is not brotherhood, then what is? तो गाइज रात के बज रहे हैं लगभग 1 और हम लोगों ने अभी होटल में एंटर किया है। जैसे ही गुवाहाटी में एंटर किया और क्रॉस किया सरायगंज ब्रिज, क्रॉस करते ही हमें ये लोग मिले जो हमें एस्कॉर्ट करके लाए अंदर होटल तक। गाइज
एक एक करके अपना नाम बताना। हाय, आई एम सीमांत। मैं टीहू से हूँ। अच्छा, ये टीहू से हमारे साथ राइड करके आए इतनी दूर तक। हाय, अभिषेक तिवारी, मैं गुवाहाटी से ही हूँ। हाय, आई एम अभिषेक चौधरी, मैं भी गुवाहाटी से हूँ। अच्छा, सब अभिषेक है क्या? Myself Nitesh Oja, I'm from Guwahati and welcome all of you to Guwahati and Northeast. अच्छा, ये तो अपने दीपक भाई साहब हैं ही। हाँ जी। Hi, I am from Guwahati. My name is Rahul. राहुल। विकास गुप्ता फ्रॉम गुवाहाटी। विकास गुप्ता। सुमित तिवारी फ्रॉम गुवाहाटी। सुमित तिवारी। विशाल गुप्ता फ्रॉम गुवाहाटी। अच्छा। फाइनली, अरे नहीं यार, ये सेपरेट बेड होने चाहिए थे। फाइनली द डे इज ओवर। वैसे तो अगला दिन स्टार्ट हो गया। बहुत इवेंटफुल रहा आज का दिन, मतलब वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डेज। कि क्या क्या किया, कितने सारे लोगों से मिले, मतलब आज तो बस मीटअप्स ही मीटअप्स होते हैं। बिल्कुल, हर 10 किलोमीटर पे एक मीटअप था, ऐसा लग रहा था। और इतने मिले कि अभी तक स्टार्ट हुआ हमारा कहाँ से? होटल से ही हो गया था। हाँ, होटल में कुछ लोग आ गए थे, फिर अलीपुर द्वार में मिले, उसके बाद फिर कुछ और लोग मिले, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और। बहुत फाइनली मतलब जब तक सिटी में नहीं पहुंच गए हम लोग, सिटी के एंट्रेंस पर भी मिल गए, जो हमें एंट्रेंस यहाँ से तक कि रूम तक छोड़ने आए। हाँ, रूम तक भी छोड़ने आए। इतना प्यार मिल रहा है आसाम से। भाई साहब, आसाम इज ऑसम। मजा आ गया। मजा आ गया। तो प्लान तो कुछ ये था कि सुबह 7:30-8 बजे स्टार्ट करेंगे और शाम को 6-7 बजे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन स्टार्ट हमने 9:30 बजे किया और अभी रात के 1:30 बज चुके हैं। और फिर बाइक की सर्विस करानी है, परसों यहाँ पर मीटअप है। तो ऑल इन ऑल गुड डे। यस, टाइम टू रिलैक्स। यस, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। So we've reached Guwahati and today is this time when these bikes will get the last service. We are getting one bike service done in Malaysia as well. It will get new set of tires, new engine oil, and yes, looking forward to it. We are at Bajaj Service Center in Guwahati and getting these bikes serviced. So this is the last service that these bikes will be getting before we enter Myanmar. So much needed service and very important service as well. Look how much abuse it has taken till now. This is how it looked when it was brand new, and look at this. मेरा नाम अब्दुल जलील है और मैं सी ऑटो बजाज में मैकेनिक टेक्नीशियन का काम करता हूँ। आज मैं ये ओडिसी वाला डोमिनार सर्विस कर रहा हूँ। मैंने ये बाइक में ये जो बाइक सर्विसिंग की है, इसमें आपका इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और फ्रंट डिस्प्ले ये सारा चेंज कर रहा हूँ। और आपका चेन का भी एक काम है, चेन एडजस्ट कर रहा हूँ, लुब्रिकेट कर रहा हूँ ओके से। बाइक आपका रेडी कर दिए हैं, आगे के राइड तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप चलाते हैं अच्छे से। बजाज डोमिनार बहुत अच्छा बाइक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है।
A very long and tiring day finally comes to an end. So it's Swastik tires, MRF Tire and Services, and we've just got the new set of MRF Revsy tires on our bikes, and the bikes got the service done as well in the morning at Sri Bajaj. The bikes are completely ready, and so are we. Hi, good morning. Day number 22, and today is Sunday, November the 3rd, and we are in Guwahati. Today we have a meet in Guwahati. We are still at the hotel, and two of our bikers from Guwahati, Shashank and Partha. So they have come here to, receive us and guide us till the initial meet point. Deepak bhai is ready, bikes are ready, हम लोग भी ready हैं. All right, let's go. Hello, good morning. Very warm welcome to the xBhp group who are traveling all over these 11 countries. They've already done 3, I believe, and they're now on to Myanmar out of Guwahati. So I wish them the very best. I'm the principal of the school that we are hosting this meet today. My name is Krishnanjan Chanda, and of course have a very safe ride, guys, and have fun. All the best to xBhp team from MRF for the ride ahead, and do have a safe ride, guys. It was our last big meet in India with bikers from Guwahati, Nagaon and Shillong. We thank xBhp Assam, including Neelam Das, Shashank Adeka and everyone else who participated and helped us organize this meet. A big note of thanks to South Point School as well for letting us organize this meet at their premises. Bye guys, bye. Chalo. Okay, so the meet at Guwahati is finally over. Now another challenge begins. We have to reach Dimapur, and Dimapur is the roads in Nagaland are not great, we are told. In fact, they are bad, worse than what we have seen so far. As soon as the Guwahati meet ended, we had to rush towards Dimapur in Nagaland, from where we will get our inner line permits made for our onward journey. We could not get these permits made from Guwahati as the office was closed on weekends. असम में बाइकर से मिलने का सिलसिला चालू है. कुछ और बाइकर्स. हेलो, हाय, आपका नाम? आरिफ. आदित्य. बलिराम साहू. आप कहीं राइड करके जा रहे क्या? जी, हम लोग आ रहे हैं, मेघालय गए थे हम लोग. मेघालय गए थे? और रहते इधर ही हैं? नहीं, हम लोग तेजपुर में रहते हैं. तेजपुर में, अच्छा. हाँ जी, पहले तैयार हो जाओ, है ना. देखो, हाँ, दीमापुर जा रहे हैं गुवाहाटी से. रास्ते में अभी पहला ब्रेक लिया है. हाँ भैया जी, आपका नाम क्या है? मृणाल कुमार दास. मृणाल कुमार दास. तो मृणाल कुमार जी, अभी आपका नारियल पानी पियेंगे. पहले ये इनके बारे में बताते हैं, है ना. ये बेसिकली डेकोरेटिव आइटम्स हैं, मिनिएचर जो यहाँ पे रेप्लिकास, यस, मिनिएचर रेप्लिकास जो
यहाँ पे ट्रेडिशनल बर्तन वगैरह हैं या जो यूटेंसिल्स हैं, बांस का बना हुआ है ये? जी बांस का। हाँ, ये बांस का बना हुआ है, तो इसको हम डेकोरेशन एज अ डेकोरेटिव आइटम घर पे ले जा सकते हैं। तो ये क्या है, इसका नाम क्या है? ये जाकोई, असमीज लैंग्वेज में ये जाकोई बोलते हैं। जाकोई और ये खालोई बोलते हैं। अच्छा। ये मछली पकड़ते हैं। अच्छा। और ये कमर में बांधते हैं, जब मछली मिलता है ना। अच्छा। ये मछली डालते हैं, डालने के लिए। अच्छा, तो इससे मछली पकड़ते हैं और इसमें मतलब मछली डालते हैं। मछली ये बड़ा होता है, वो सामने बड़ा वाला लगता है। अच्छा, जाकोई और खालोई। वाह। और ये सब भी वही सब सब्जी बर्तन मतलब आप किचन में ये चावल सब्जियां धोने के लिए घर में काम आता है ये। अरे वाह। ये जो होता है ना मंदिर में फूल वगैरह लाने के लिए। ओके, अच्छा। ये तो हो गया हैंड फैन। अच्छा, अरे वाह, हैंड फैन, इसकी बड़ी ज़रूरत है। एक सेकंड यार, बड़े दिनों बाद दिखा है। अब नॉर्थ इंडिया में नहीं दिखता ये, अगर अनलेस अनटिल आप गाँव में हो ऐसे करके। आहा, हमारे यहाँ वेस्टर्न यूपी में इसको बीजना बोलते हैं, बीजना। और हरियाणा में भी बीजना बोलते हैं। इसमें दही है सर। दही है, बेमो में दही रखते हैं। अच्छा, इसका बहुत फेमस है। अच्छा, ये जमाते हैं इसमें। अच्छा, तो ये क्या स्वीट होगा कि या खाली नॉर्मल? अच्छा, ये देखिए बढ़िया दही। अरे भाई साहब, इसमें कच्चा दूध परसों डाला है, आज जम गया। अच्छा, कच्चा दूध इसमें डाल देने के बाद एक दिन के बाद दही हो जाता है। इसको ऐसे ही खाते हैं? जी जी जी। सुंगा डोई बोलते हैं। सुंगा डोई। सुंगा डोई। वाह। मेरा नाम प्रभात है। प्रभात आप नौगांव से हो? हाँ जी। तो प्रभात नौगांव से हैं। नौगांव, ये गुवाहाटी आए थे ना मीट पे? हाँ जी। हाँ, ये तो गुवाहाटी मीट पर आए थे नौगांव से राइड करके। नौगांव कितने, करीब 150 किलोमीटर ना? 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर राइड करके आए थे मिलने, और अब हमारे साथ जा रहे हैं। थैंक यू। क्या बोलते हैं? सेपा। सेपा, यहाँ से मछली घुसता है। अरे वाह, तो ये मछली पकड़ने का जाल। इसका भी एक टेक्निक होता है भैया। जब ये बहते पानी में ऐसे रखते हैं ना, ऐसे रखते हैं, बहते पानी बहता है ना, जब ये मछली घुस जाता है। अच्छा, मछली घुस जाता है, इसका अंदर रह जाता है, फंस जाता है। जब मछली निकालने का समय आ जाता है तो ऐसे पूरा ये खोल के पूरा ऐसे मछली निकाल देता है। अरे वाह, ये असम का विलेज का लोगों का ये टेक्निक होता है ऐसे मछली पकड़ने के लिए। The roads from Guwahati to Nagaon and even beyond were a biker's delight. It was hard to find even a single bump on the road, and the scenery was excellent. What more a biker could ask for? Welcome to Nagaon, Sugandhi Dhaba cum AC restaurant. Nice to meet you. Yeah, fine. Nice. सुनील जी कहाँ गए? सुनील जी तो ये रहे। Oh, you're sorry. बहुत दर्द हो रहा है, क्रैम्प आ गया, पता नहीं क्या आया है, हालत डाउन हो रही है। सो ट्रेडिशनल असमीज थाली हम लोग खा रहे हैं कहाँ पे? नगांव में। इट लुक्स यमी एंड वी आर हंग्री लाइक हेल। और ये सब ना, बस मन कर रहा है कि फ़ोटो वोटो वीडियो बाद में लेना, पहले खा लो। तो खाते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे बताओगे ये क्या क्या है? ये हो गया आपका दाल हो गया, ये भी दाल ही एक। अच्छा, ये भी दाल है। तो ये हो गया आपका खीर, ये मटर पनीर हो गया। अच्छा, तो 3 दाल, ये मटर पनीर, ये नॉर्थ इंडिया वाला कुछ आ गया। ये खीर है मीठा, ये पापड़, अचार, ये करेले का है, करेला। हाँ, ये भी करेला का है दूसरा। ये आई थिंक परवल है। हाँ, और ये आलू है। ओके, ये बैंगन हो गया और ये आपका पापड़। वाह, चलो बस अब कंट्रोल नहीं होता, खाते हैं। चलो प्रभात भाई। अच्छा, साथ में चल रहे हो? कहाँ तक? दोबोका तक जा रहा हूँ। कितना दूर है? यहाँ से होगा 30-35। अच्छा, फिर वहाँ से आप लोग को जो रास्ता दिखाऊंगा सीधा दीमापुरी जाएगा। तो आपका घर कहाँ है? इधर ही है। तो उधर किस ले जा रहे हो? आप लोग? अरे हम चले जाएंगे, क्या बात कर रहे हो यार। हम चले जाएंगे। को जा रहा है ना। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय बाय। चलो जी। We had a lunch break at Nagaon and then continued towards Dimapur with Prabhat riding with us for some distance. दादा, कार्ड से पेमेंट होगा? हाँ, होगा। बहुत बढ़िया, करिए। फुल कर दीजिए, फुल। पेट्रोल डालिए बढ़िया वाला एकदम।
Prabhat, okay, thank you brother, thank you for the company and everything. See you in Delhi. Sure. Whenever you are there, please feel free to visit xBhp office. हाँ चलो ऑल राइट सेफ, आराम से पीछे, ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय। चल अब अभी एक काम कीजिएगा, रास्ते में कोई अगर हाथ बीटेगा तो मत उठिएगा, दिमापुर पहुँचेगा, हो सके तो एक कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, ऑल राइट, थैंक्स ब्रदर। जर्नी हो गया, थैंक्स अलॉट। चलो मिलेंगे तुम्हारा। हम चल दिए हैं दिमापुर की तरफ। उसका बाइक अच्छा है कि ये अच्छा है? दोनों अच्छा है। दोनों अच्छा है, चलो इसी बात पे दे ताली। यप्पा दोस्त, चलो 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 चलो। The sun had set by now, and we had still many hours of riding left. Also, the roads would get narrower and bad. We were warned by bikers not to stop even if someone tries to stop us. And we were riding through this lonely road through the jungle when we saw these two bikers waving at us to stop, which seemed a little scary and suspicious initially, but when we stopped, this happened. Epic man, this is epic. ओ मेरे भगवान, कितने सारे लोग वेट कर रहे हैं यार। बाइकर्स Hi. Welcome to Karbi Anglong, sir. Thank you, brother. Thank you. Welcome. Thank you. Bro, welcome to Karbi Anglong. Thanks, brother. Hi. Thank you. What's the name of the place? Manja. Manja? Yeah. Okay. So, we are in Manja and it's like in the middle of the jungle and these are the bikers here. Hi. Hi. सुनील जी, मैं ही हूँ, जिनसे कांटेक्ट कर रहा था। अच्छा, आप कांटेक्ट कर रहे थे। ओके, एक सेकंड। Sir, welcome to Karbi Anglong. Welcome to Karbi Anglong, sir. Thanks, brother. Thanks. Hi. 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 Thank you. Again, one more surprise meet with the bikers in Assam. This is still Assam, right? We have not entered Nagaland, yes. So, one more surprise meet. We are in Manja, which is about 30-35 kilometers from Nagaland border. Yeah. And again, a bunch of bikers waiting for us. Subscribe to my YouTube channel. You will go to places, man. You will go to places. So please subscribe to his YouTube channel. एक सेकंड सब लोग इधर आके एक बार क्योंकि लाइट इधर है ना, हाँ थोड़ा सा इधर आके just one more shout once more. Okay, now the villagers will come. जी, one more surprise visit in Assam. तो लगता है असम बाइकर्स इन असम विल नॉट लेट अस गो आउट ऑफ असम, है ना। अभी लगता है कितना दूर है अभी यहाँ से बॉर्डर? आई थिंक 20-30 किलोमीटर है ना। हाँ, तो आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर कि वहाँ पर और 20-30 बाइकर हमें अभी जाते जाते मिल जाएंगे असम के। तो असम इज़ ऑसम भाई साहब। ये दिस स्मॉल प्लेस इज कॉल्ड मांझा एंड मांझा में ये एक ज्योति टायर्स एंड एक्सेसरीज नाम की शॉप है जो हमारे एक बाइकिंग ब्रदर्स चलाते हैं, और इनके साथ यहाँ पे बहुत सारे बाइकर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड एवरीवन एंड यस लॉट ऑफ पीपल. सो अ सरप्राइज बाइकिंग मीट, बाइकर्स मीट हियर. लवली. यस, हाँ, हमें इसके बारे में पता भी नहीं था. यस. To be honest, this was the most unexpected meet for us on this trip, and at an unlikeliest of the places. And then these lovely people also escorted us to the Assam-Nagaland border to make sure we reached there safely. लेकिन बिल्कुल सुनसान और वीरान जगह है यार, दोनों तरफ कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा जंगल है.
और कई जगह तो रोड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल टूटे फूटे रोड है और जंगल के बीच में से गुजर रहा है। वैसे सही है यार, ये सारे भाई लोग आ गए तो आराम से निकल जाएंगे विदाउट एनी टेंशन। ओह हो, क्या रोड था, मज़ा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया ठहरने के लिए हम लोग का पेश। बिल्कुल आएंगे तो आपसे मिलेंगे हम। अच्छा, नागालैंड स्टार्ट हो गया? 3 किलोमीटर यहाँ से नागालैंड है 3 किलोमीटर। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। भाई साहब। And as we reached the Nagaland border, there was another surprise waiting for us. A bunch of bikers from Dimapur. हम लोग का नागा ट्रेडिशनल है, सो हम लोग का एक ट्रेडिशनल आप लोग को कुछ एक फेलिसिट करने का मन है, सो आप लोग प्लीज़ Yes. I want to make a few introduction to this muffler. This is very important. He's the chief, Naga chief. Oh, yes. yeah. This is Honored to worn. meet you, brother. Yes, this is worn by a warrior. Okay. Yes. Oh, Actually, nice. from a community called Simi. Guys, on behalf of entire xBhp team, I would like to say thank you to all of you. Okay. And we are really, really honored to Guys, meet please you. clap, And like actually we say hui. Hui is part of a bold guy who says hui. Okay. Who can produce himself. Okay. Who can like So fight we can for do himself. it together. Yes. And then we are here together. You start, then we will join. Yes. Okay. This is a muffler from a community called Simi. Yes. Inhabitants of Nagaland. Yes. And then this is worn by a warrior. Yes. And then here we are all a warrior now. Yes. We love you guys. Guys, this is absolutely lovely. I mean, the entrance to Nagaland was a bit trouble in terms of road, but after entering here, it is all worth. We just entered and we have all these lovely biking brothers from Nagaland. Nagaland KTM riders who've been waiting for us here at the border to receive us, and this is very special. They honored us. I mean, they gifted us this muffler, which is worn by the warriors of Sumi tribe. So this is worn by the warriors of local Sumi tribe. Honored to receive this. This is special. The entry into Nagaland will always be remembered. तो आज है डे नंबर 22 और हम हैं अभी दीमापुर में। दीमापुर लास्ट नाइट पहुंचे थे। ये हैं दीपन से क्या, और इनके साथ है जिंतू। तो दीपन और जिंतू, तो ये लोग कल हमसे कांटेक्ट कर रहे थे, और जब हम लोग आ रहे थे यहाँ पे दीमापुर, तो इन्होंने बोला कि आप इधर की साइड से निकले, काजीरंगा साइड से, ठीक है। लेकिन वो रास्ता में ज़्यादा लंबा था, तो इसलिए हम वो कर नहीं पाए, रास्ता उस रास्ते से आ नहीं पाए। लेकिन ये भाई क्योंकि कल हमसे नहीं मिल पाए थे, तो इसलिए आज 100 किलोमीटर दूर ऐसे ख़राब रास्ते पे, जहाँ पे मतलब 8-8, 10-10 इंच गहरे गड्ढे हैं, ये उस रास्ते पे 100 किलोमीटर बाइक चला के आए हैं हमसे मिलने के लिए, और ये गामोसा गिफ्ट करने के लिए। प्यार है, प्यार सुनील भाई का प्यार, सही में प्यार है। एंड टीम का प्यार, ये गिफ्ट, ये क्या बोलते हैं, कर्ज हम ना जिंदगी में नहीं चुका पाएंगे, ये जिंदगी भर याद रहने वाली है ट्रिप। The main reason of our stay in Dimapur was to arrange the permits for our ride ahead. But thanks to these bikers, we managed to have a small meetup as well.
Let us go. Jai Mata Di. Good morning. It's 6 a.m. and we are in Dimapur right now, leaving for Imphal. The total distance as per my OnePlus phone is 202 kilometers to the hotel, and it would take us 8 hours. So you can imagine how bad the road conditions are. It is going to take 8 hours for us to cross 202 kilometers. Especially the first 80 kilometers are really bad. So yes, we are just a little ahead of Dimapur town, and now we are entering the hill area of Nagaland. The road conditions are absolutely pathetic, I tell you. You see, this is all broken and muddy, and this is very slippery, very slippery. You know, it's hard to ride the motorcycle even at 10 kilometers per hour. Here, you have to be very careful, and see, I can't even walk here. It's so slippery, I can't even walk. And you can see the tire conditions. See the amount of mud that has gone into these tires. But thankfully the tires are holding well enough for us to be able to ride. But we have to be very careful. Okay, everything is clear. ठीक है, थैंक यू सर. ये सर ने ये हमारा ILP इनर लाइन परमिट जो हमने दीमापुर से बनाया था, सर ने ये स्टैम्प कर दिया है. थैंक यू वेरी मच सर. ओके देन बाय. सर हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल. उन्होंने खुद जाके हमारा ये स्टैम्प कर दिया. सो दीज इनर लाइन परमिट्स, इफ़ यू आर एंटरिंग Nagaland, you have to get these inner line permits even if you are an Indian. So we got this done from Dimapur. You can also get it done from Guwahati. Okay, all you need is your basic identity cards and a couple of photographs, and we got this done. In fact, one biker friend of ours, Sultan, Abe Sultan, he got it done for us. He got it made for us. So thank you so much, Sultan, for this, and yes, thank you so much. आप भी चलिए हमारे साथ. जाने का दिल है लेकिन उपाय नहीं है सर. अरे सर, हम लोग छुट्टी भी नहीं मिलते. चलिए सर, ठीक है, फिर मिलेंगे. ठीक है, धन्यवाद. सेफ जोड़े. थैंक यू सर. So this is a small roadside dhaba. This is the road that is coming from Dimapur side and going to Kohima this way. And this is the dhaba, MSK Hotel.
और ये बाइक्स है बड़े मज़े से चल रही हैं। आज टायर को बड़ा मज़ा आ रहा होगा, अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल रहा है। एंड लेट्स गो इनसाइड द ढाबा एंड सी व्हाट इट इज़ देयर, व्हाट इज़ देयर टू ईट। ओके, बहुत सारा नमकीन है, शक्करपारे, नाइस नाइस नाइस। दीपक, हाउ वाज द रोड टुडे? मज़ा आ रहा है मुझे तो। एक्चुअली ऐसे ही रोड पसंद है, मतलब जिसमें कि एक्सट्रीम एडवेंचर होगा, एडवेंचर हो। और बाइक ऐसे फिशटेल कर रही थी, कई बार फिशटेल किया। टायर्स बहुत अच्छे हैं, टारमेक पे भी हमने चलाई है और फिर वेट सरफेस पे भी चलाई है, लेकिन यहाँ पर रोड कंडीशंस कुछ एक्सट्रीमली, मतलब आप समझ सकते हैं, ख़राब है। एक्सट्रीम। हाँ बिल्कुल एक्सट्रीमली एक्सट्रीम है। तो ट्रक्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो निकल रहे हैं आराम से, धीरे धीरे। हमने सिर्फ कवर किया अभी तक 35 किलोमीटर, वो भी 3 घंटे में। कुछ एक फ़ोटोग्राफी ब्रेक्स भी हो गए जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन मज़ा आ रहा है एक्चुअली। ओके, चलो मैं लेट मी शो देम द व्यू फ्रॉम द होटल विंडो। ओके, लुक एट दिस, द ढाबा विद अ व्यू। वाओ, look at this. The road from Dimapur to Kohima was the most challenging road that we had seen on this ride so far. And we were riding at an average speed of no more than 10 kilometers an hour. Just got the news that there has been a bomb blast in Imphal, in the market, and it's Google still shows that we are at least 5.5 hours away from Imphal, which means that we will be riding at least 1.5 hours into the darkness. Like, we'll be riding at least 1.5 hours after it is dark, and while entering Manipur and going to Imphal. So Manipur is the most troubled state, one of the most troubled states after Kashmir in India. So the kind of roads that we were just riding on, uphill, downhill, completely broken, no road at all. These kind of roads take the maximum toll on your motorcycle and test you to your limits, and also test your motorcycle to the limits. Because what happens is, you are riding in low gear. You cannot, because on these roads you cannot ride faster than 10 kilometers per hour. So the engine doesn't get to cool down, because there's no air that is cooling down the engine. So your engine oil has to work harder, and the engine, no matter how good the engine oil is, it will eventually heat up. So it's very important to use good quality engine oil, especially in riding conditions like this. And also you need to have good tire, because these kind of roads, gravel, it's just rocky. There are sharp rocks, and they put a lot of stress on the tires. So if you don't have a good tire, good quality tire, and if you don't have correct pressure, your tire may get damaged. So be careful while you ride on these roads. पूरा ही ट्रक पलटा हुआ है यहाँ पर। लगता है कि दलदल होगा, तो दलदल में इधर का पहिया गया और वेट की वजह से पूरा का पूरा
बाहर इस साइड आ गया। एक ट्रक उधर देखा था, एक ट्रक ये देखा। तो ये जो रोड है काफ़ी ख़तरनाक रोड है। जब भी आप इस पर गाड़ी बाइक कुछ भी चलाएं बहुत सावधानी से चलाइए। एक बार मेरा फॉल हो चुका है। As we are approaching Kohima, the roads are getting slightly better. In fact, it is much better than what we have seen so far. कोहिमा से ये इधर से भी जाएगा ना? वो सीधा जाएगा वो। ये नहीं जाएगा? हाँ यहाँ से जाएगा। ये सीधा? ये रास्ता नहीं जाएगा? हाँ ये रास्ता। अच्छा। वो भी जाने के लिए से गया, वो घूर के जाएगा। हाँ हाँ। वो सीधा हो जाएगा। आगे जाम है ना, लेकिन सिटी में जाम लगा है। बाइक तो हो जाएगा ना, जाम नहीं। अच्छा ठीक है। Today we are going to Imphal and we started from Dimapur in the morning at 6 in the morning, and right now let me check the time. It's almost 1, so that means around 7 hours, and in these 7 hours we have covered only about how many kilometers? About 80 kilometers. So our average speed has been 10 kilometers per hour, and that is mostly due to extremely bad roads and a lot of photography breaks. Right now we are on the outskirts of Kohima, and still have about 5.5 hours of riding before we reach Imphal. And we just got a news that there has been a bomb blast in Kohima, in the main market, and about 6 people have been injured. So the security has been tightened and there is a lot of chaos over there. So let's see what happens. I don't think we'll be taking any lunch breaks now. We should be riding there as soon as possible now.